Shalom. Greetings in the name of Yeshua, our King. Welcome to this online live Bible study along with Reverend Dr. Shekhar Nand. Thank you for joining in. I'd like to begin this online study today as we go live. I'll read from the Gospel of Matthew, chapter 10, verses 27 and 28. What I tell you in the dark, say in the light, and what you hear whispered, proclaim on the housetops. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Now we need to take this verses that we just heard seriously and tell about everything that we know about Jesus. The world currently, each and every one around us, times including us, are scared about what's coming, scared about this epidemic that has been spread. But honestly, we don't need to fear. All those who know Jesus, we do not need to. We need not fear. We need to tell the world around us of what Jesus has told us. Fear is not from God. Fear is not from Jesus. Tell them of what Jesus has done. Who's going to tell them? Let's not get scared and fear the one who can attack our body. But let's fear that the one who can not only destroy our body, but also our soul in hell. We are scared for things which we hear about. We need to tell people about Jesus and everything that he has told us. He says, whatever I have told you now, scream from rooftops and let the whole world know. This is the moment that you need to tell your neighbors, your friends. Just imagine if these multiply and then they tell people, others, about Jesus, the fear will be gone. And that's what Satan feeds on, fear. Let me just pray. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful opportunity that you've given us. We believe, Lord God, that this is your plan for your people, that we may come back. All those who are called by your name may turn back to you, that you may lead us to that place that you have promised us. Master, we thank you, Lord God, for all the faithful who have joined in already, and the rest whom you have ordained and are on their way to join us on this live study today. Father, we pray, Lord God, that each one of them, you would bless them with your own revelation and understanding about what they are going to hear and what they are going to read and what they are going to study with. Lord Jesus, that each one of them would have that courage and boldness to share with others what they have learned. Master, we thank you, Lord God, for this day and this opportunity. We ask you to take control of this time, Lord God. We surrender ourselves and all those joined in into your hands. Master, all the equipment that is around us, we call upon your precious blood upon this study. We make this prayer in the mighty and precious name of Jesus Christ of Nazareth. And all those gathered say, Amen. Amen. I would like to begin this study. I welcome Reverend Dr. Shekhar Nand, and we will continue with our study on the parable of redemption. This is the third part today. We take it up from here.
Welcome, Dr. Sir. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को नमस्कार। In the name of Jesus, I welcome you all. फिर से आज का ये समय प्रभु ने हमें दिया है कि छुटकारे के विषय पर हम आगे बढ़ें। The time that the Lord Jesus has given us today, we will dwell upon this word of redemption and we will move ahead. 2 दिन पहले जो कुछ हुआ ये YouTube में आपके लिए उपलब्ध है। All that happened, the study that we covered in the past 2 days, the link is available, the video is available on the YouTube. मुंबई के बाहर के लिए मेरे नाम से जो चैनल है उसमें अवेलेबल है, और जो मुंबई के लोग हैं उनके लिए हमारे यहाँ के लोकल AGM का जो साइट है उस पर उपलब्ध है। All those who are connecting us from outside Mumbai, on Reverend Doctor's channel on YouTube, you will find that link there, you'll find the video there. And for all those who have joined in from Mumbai, those you can connect with us on the Abundant Grace Ministries YouTube channel for the local ones. कल हमने इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 29 पद में एंड किया था। We ended yesterday with the verse from Hebrews chapter 11 verse 29. हमने देखा था कि लाल समुद्र जो बपतिस्मा का दृष्टांत है, लाल समुद्र वो जगह है जहां पर जो लहू की छाप लेकर आए थे वो बचाए गए और जिन्होंने लहू की छाप नहीं ली थी वो मारे गए। We saw yesterday about the Red Sea parting. All those who were prepared and had taken the unction of the blood of the lamb, and those who were prepared, this is a continuation of the parable of redemption. बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि बैप्टिज्म में होता क्या है। Many of us are not aware of what happens in baptism. तो हमने कल पूरे 1 घंटे बैप्टिज्म जो बाइबल का कॉन्सेप्ट है उस पर पूरा अपना ध्यान लगाया। And yesterday we dwelt upon the entire study, dwelling upon this concept of baptism. So इब्रानी 11 और उसके 29 में ये जो पद है ये एक शब्द से आरंभ होता है। This verse from chapter 11:29 of Hebrews, it starts with explaining all this. विश्वास ही से, by faith. ये एक शब्द के साथ ये इंफॉर्मेशन आया, विश्वास ही से ये दोनों काम हुए। And the entire message comes across with the words only through faith. पहले दिन से मैं कह रहा हूं, I've been saying this right from day one. विश्वास है तो भय नहीं होता है। If you have faith, there is no fear. और यदि भय है तो ये प्रमाण है कि विश्वास नहीं है। And if you have fear, there is proof enough that you do not have faith. बहुत ही कठिन समय में पड़े थे ये लोग। The people were going through a real difficult time. सामने भी मृत्यु थी, पीछे भी मृत्यु थी। They were facing death as well as they had death on their backs. सामने समुद्र था और पीछे मिस्री सेना थी। And they had the Red Sea in front of them, and they had the mighty army of the Pharaoh chasing them. लिखा है कि by faith, विश्वास ही से वे लाल समुद्र से पार हो गए। And it's written that by faith they crossed over the Red Sea. एक इवेंट याद करना चाहता हूं मैं। I would like to recall an event. जब यीशु झील पर चलते हुए आ रहा था और चेले नाव में थे। And that event is this: when Jesus was walking on water and the disciples were in the boat. और वो डर गए कि कोई भूत को देख रहे हैं। And they were scared that they thought that they were looking at some ghost. जब वो पास आया तो पतरस ने पूछा कि उसने कहा मैं हूं, डरो मत। And when he came closer, they were scared, and Peter asked,
who it was. Jesus replied, "Don't worry, it's me." और उसके बाद पीटर ने कहा कि मैं भी आना चाहता हूं, चलते हैं। And to that, Peter replied, "I too would like to walk on water like you." और यीशु ने कहा आजा। Jesus just replied, "Come." फिर क्या हुआ हम सबको याद है। And what happened later? We all know about it. कुछ कदम चला वो। For some time, Peter did walk on the water. जब तक उसकी आंख यीशु की तरफ थी, As long as he had his eyes fixed on Jesus, पानी पर चल रहा था। he was walking on water. जैसे ही उसकी आंख हटी, The moment he took his eyes away from Jesus, वो डूबने लगा। he started to drown, to sink. यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसको उठा बचाया। Jesus put forth his hand and saved him उसके बाद एक प्रश्न किया, and asked him a question. तेरा विश्वास कहाँ था? Where is your faith? आज भी यही प्रश्न है। Today, the same question is asked. जो डरेगा वो डूबेगा। The one who fears will drown. आज पूरा संसार डर के मारे घर के भीतर है। And the whole world today is because of fear is locked up in their homes. मृत्यु के भय के मारे It is the fear of death that has kept them inside. हर कोई भीतर है। Everyone is inside. किसी के पास उपाय नहीं है, There's no one who has a solution to this. पर हमारे पास उपाय है। But we do have a solution for it. हम जानते हैं सेवियर कौन है। We know our Savior. किसी भी स्थिति से बचाने की वो शक्ति रखता है। To no matter what the situation is, that He has the cure for it. छुड़ाने वाला परमेश्वर, He is the one who saves us from everything. बचाने वाला परमेश्वर। He is the one who saves us. और इसलिए आज जबकि न साइंस के पास इसका कोई उपाय है, न किसी और शक्ति से कोई बच नहीं सकता, ये सबने समझ लिया है। And everyone knows no science or any other power that could save anyone from this situation today. इसलिए हमने पढ़ा। And that's the reason why we जो just कुछ read. तुम लोगों ने अंधेरे में सुना है, अंदर अंदर सुना है, Whatever you have heard in the dark and have heard it in private, उसे कोठों पर प्रचार करो। you scream from rooftops, रोड पे जाके नहीं। not going on the roads. अब देखिए कि हम माध्यम को कैसे यूज कर रहे हैं। And see, how do we use mediums that are available to us? आपके पास आपके घर में मोबाइल है। And you have the mobile with you. एक एक विश्वासी यदि दो नेबर को भी अपनी बात बताता है, Each of you believers, if you call upon your neighbor, at least two of them, each one calling up two of your neighbors, मृत्यु से कैसे बचोगे? how would you save yourself from death? तो भारत देश में एक रिवाइवल आएगा। There could be a revival in our great nation. जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, When someone falls sick, ऑलवेज वो उपाय खोजता है। he always looks for a solution. जो कुछ बताया जाता है उसको वो करता है, And everything that has been told to them, they do it. और इसलिए And that's why सारी दुनिया डर में छिपी हुई है the entire world is scared and are hiding from fear. और कान न्यूज की ओर लगाए हुए हैं। And their ears are glued to the news. कोई एक खबर बचने का मिल जाए। One news that could save them from all this. गुड न्यूज हमारे पास, We have the good news. न्यूज वालों के पास नहीं है। The news people, they don't have that news. गुड न्यूज हमारे पास, We have the good news. सुसमाचार हमारे पास, The good gospel, the gospel, we have it. बचने का समाचार हमारे पास। The gospel that could save, the news that could save, we have it. आप चौकों में मत जाओ, And you don't have to go on crossroads. सड़क में मत जाओ, Don't go onto the roads. आप मीडिया को काम में लाओ। You use the mediums that you have with you. अपने फ्रेंड सर्कल में, Within your friend circle, अपने फैमिली सर्कल में, within your family circle, अपने सोसाइटी में within your society. बताइए, Tell them, यही समय है। this is the time. सो हम लोग अपने अध्ययन में आगे चलेंगे। Now we will proceed in our study. निर्गमन 12 अध्याय पर हमने पहले दिन ध्यान किया। The first day, we studied from the book of Exodus और उसके and बाद 12. 13 और 14 अध्याय जो है वो बताता है कि कैसे ये लोग निकल गए और कैसे
तो इनके शत्रुओं को परमेश्वर ने नाश किया। And as we proceed, the chapters 13 and 14 instructs us, tells us that how God destroyed all the enemies that came across them or came facing them. और तब 15 अध्याय And in chapter 15 एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन देता है। gives us a very vital information. एक पद पढ़िए, We will look at Exodus 15। chapter 15. We will take it from verse 1. Then Moses and the people of Israel sang this song to the Lord, saying, I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea. जब वो मिस्र में थे, बंधुआई में थे, When they were in Egypt in bondage, बंधन में परमेश्वर के लिए गीत नहीं गाया जाता है। and in bondage, you do not sing songs to the Lord. बंधन में आदमी रोता है, चिल्लाता है, दुहाई देता है। And in bondage, people scream, cry, wail, and keep weeping all the time. फिर से मैं बता दूं, I'd still tell you again. हमारी तो अजीबोगरीब दशा है। And our situation is a little wavered. कैसा? How? सच ये है कि कोई पाप से छूटा नहीं और उसका गीत गा रहा है। None of us have been redeemed from sin, and we are still singing his songs. अभी भी शैतान और उसकी सेना और उसके अशुद्ध आत्माओं से हम ग्रसित हैं। And we are still surrounded by Satan and all his demons. अभी भी हमारे अंदर पाप का स्वभाव बना हुआ है। Even now, the nature of sin is still within us. और हम लोग गाना गा रहे हैं और सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। And we are singing songs and we think that we are worshipping God. इन लोगों ने कब गाना गाया? When did these people sing these songs? जब ये मिस्र से निकले When they came out of Egypt और जब इन्होंने लाल समुद्र पार कर लिया। and when they crossed that Red Sea. और तब लिखा है कि मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। And that's where it is written that people sang this song for Moses and Yehovah. एज पर स्कॉलर, एक विद्यार्थी होने के नाई मैं जानता हूं कि सबसे पहला छुटकारे का गीत जो मनुष्यों ने गाया परमेश्वर के लिए वो निर्गमन 15 अध्याय है। And as a Bible scholar, the one who meditates and studies the Word of God, I've come across this the 15th chapter of the book of Exodus, and I find that this is the first place where the song of praise has been sung for the Lord. छुटकारे का गीत। And this is a song of redemption. और तब ये लोग केवल गाना नहीं गा रहे थे। And they were not just singing this song. 20 पद पढ़िए, निर्गमन 15 का 20 पद। Verse 20, it says, Then Miriam, the prophetess, the sister of Aaron, took a tambourine in her hand, and all the women went out after her with tambourines and dancing. आज के दिन In today's time and age, जो मसीही लोग हैं, the ones who follow Christ. मैं तो मुंबई से बोल रहा हूँ I am speaking from Mumbai right now. और तब पूरे भारत देश में अभी हमारी आराधना का रूप रंग पहले जैसा नहीं रहा। And the entire outline of our worship is not like before. मेन लाइन चर्चेज में जो गीत हुआ करता था जहां से मैं बॉर्न अप हूँ, तो वो गाने ऐसे होते थे जैसे कि कोई गाते गाते सो जाएगा। And the mainline churches from where I come, the songs that were being sung, if you would hear them, it would really put you to sleep. एक हिम बुक आया करता है, We used to have a hymn book there, मसीही गीत संग्रह, and that used to be called a collection of the songs for the Lord. उसके गाने, Those songs और आज के गाने, and these songs today, जमीन और आसमान का फर्क है। there is a wide difference, like as if it is heaven and earth. चाहे वो मेन लाइन चर्च हो, चाहे वो बिलीवर्स असेंबली हो, चाहे वो पेंटिकॉस्टल ग्रुप है, सबका आराधना का तरीका एक जैसा हो गया है। And no matter which denomination it is, whether it's the mainline churches, whether it's the believers assembly, whether it is Pentecostal or any other, the pattern of worship
is not different at all. लगभग एक जैसा. It's almost the same. कीबोर्ड्स आर अवेलेबल, Keyboards are available, गिटार, वेस्टर्न, सारे म्यूजिक the guitars and every Western instrument और डांस, and the dancing, सब कुछ होता है सब जगह. and everything happens everywhere. जो चीज करिस्मेटिक ग्रुप में मुंबई में होता था, जो यहाँ से शुरू हुआ, And the things that used to happen in charismatic groups in Mumbai, it started off here, न्यू लाइफ फेलोशिप को मैंने देखा है. and I have seen it in the New Life Fellowship. सिंगिंग एंड प्रेजिंग एंड डांसिंग का जो नया रूप उन्होंने दिया, And they are the ones who gave the singing and dancing and praising. They are the ones who brought this out. जो मैं जानता हूँ उसके अनुसार पहले मेनलाइन चर्चेज में नहीं हुआ करता. And all these were never happening in the mainline churches before. अभी चाहे वो कोई भी चर्च हो, छोटा है, बड़ा है, मेनलाइन है, जो कोई भी ग्रुप है, सब लोग आजकल गाना गाते हैं, डांस करते हैं और आराधना और स्तुति में बहुत अच्छा दिख पड़ता है. And all, whether it is any kind of denomination, mainline or small, big, whatever congregation there is, and the kind of worship that is there around today, it looks to be good. ये बहुत अच्छा है. It's good. परमेश्वर की आराधना और स्तुति करनी बहुत अच्छी है. To worship God and to praise His name is very good. पर आपको मैं बता दूं, Now I'll tell you, ये जो डांस कर रही थी मरियम, the one who is dancing in the scripture that we just read, Miriam, आगे जाके लिखा है, as we proceed, it is written, इसको कोढ़ हो गया. she contracted leprosy. क्यों हुआ था? Why did it happen? पढ़ लेना आप. You go home and, or rather when you are in your free time, please read that. स्पेशली जो क्वायर लीडर्स हैं, Especially those who are associated with the choir जो कोरियोग्राफर्स हैं अभी चर्चेज में, and those who are choreographers in the so-called जो churches एक्शन सॉन्ग सिखाया करते हैं. and the ones who teach action songs. तो मैं तुमसे वो कहना चाहता हूँ कि बी केयरफुल. And I'd like to appeal to those people, be careful. ये मरियम जो है वो लीड कर रही थी डांसिंग में और सिंगिंग में. And you notice that this Miriam was the person who was leading in dancing and playing of instruments. एक समय आया And there was a time जब उसको कोढ़ हो गया. when she contracted leprosy. इसको ध्यान रखना. Just keep this in mind. आगे हम देखेंगे. We will proceed with forward now. 22 पद लिख. We will take it to 22. verse 22. Then Moses made Israel set out from the Red Sea. And इनका डांस खत्म हुआ, now they finished their dancing, गाना खत्म हुआ, they finished their singing. उसके बाद यात्रा आगे बढ़ी. Then again, they proceeded with their journey. और लिखा है कि वे शूर नाम जंगल में आए. Then they came to a place, a wilderness of Shur. और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला. And as they were traveling through the wilderness for 3 days, there was absolutely no point of water there. अभी अभी डांस कर रहे थे, And just a few days back, they were dancing, गाना गा रहे थे. they were singing. कुछ ही समय बाद एक ऐसा समय आया जब पानी नहीं है पीने के लिए. And just a few days later, now they don't have water to drink. क्या लिखा है? What's written? 23 पद पढ़िए. We will look at verse 23. When they came to Mara, they could not drink the water of Mara because it was bitter. Therefore, it was named Mara. और तब लिखा है, And that's it is written. इन्होंने छुटकारा पाया, They got their redemption. वो बचाए गए, लाल समुद्र पार किया, They were delivered. They crossed the Red Sea. प्रभु का स्तुति किया, छुटकारे का गीत गाया, They sang worship songs, praises to the Lord. They danced. बड़े खुश थे, आनंद मना रहे थे. They were very, very joyful. They were very happy. एक वर्ष आगे बोलता है, बताया बाइबल का रिकॉर्ड है कि ये एक ऐसी जगह में पहुंचे जहां पर कड़वा अनुभव था. And they came to a point where they had a bitter experience. और तब वे क्या कहने लगे आगे? Now we will see what they started saying. तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिएं.
and they started grumbling. The word is not grumbling. Actually, they started speaking nuisance to Moses. Let's read that. And the people grumbled against Moses, saying, "What shall we drink? पानी है भी तो कड़वा है। There is water, but it's bitter." 3 दिन के मार्ग पर 3 days into the wilderness. यदि देखें हम पीछे पलट के And if you look back, तो 3 अध्याय के 18 पद में उस परमेश्वर ने कुछ बोला था। and in the chapter 3, verse 18, God said something. पढ़िए 3 अध्याय उसके 18 पद में परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था। सबसे पहली बार रिडेम्पशन के विषय में, क्यों छुटकारा चाहिए। And they will listen to your voice, and you and the elders of Israel shall go to the king of Egypt and say to him, "The Lord, the God of Hebrews, has met with us. And now, please let us go a 3 days journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God." मैं बताना चाहता हूँ I would like to tell you this. कि 3 दिन का बाद जो कहा था वो मिस्र से निकलने की बात नहीं कहा था। And when he said this to Pharaoh, he was not talking about the 3 days journey coming out of Egypt. क्योंकि मिस्र से लाल समुद्र कितने दिन की यात्रा थी ये किसी को नहीं मालूम। And no one knows how long the journey would have taken from Egypt to the Red Sea. ये कितने घंटे का था ये नहीं मालूम। How many hours that the journey would have taken, no one knows. एक लंबा रास्ता था, It was a long journey. पर परमेश्वर ने कहा था कि अपने एल्डर्स को लेके फिरौन के पास जाना और उससे कहना कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। And in that process, God had told Moses to talk to the Pharaoh, to tell him about his people, that they're going to take a 3-day journey into the wilderness, that they would have a sacrifice. यदि मैं कहूं कि ये लोग मिस्र से निकले तो इनका छुटकारा हो गया तो गलत बात। And if you say this, that those people who came out of Egypt had already been delivered, then it would not be right. नहीं, ये अभी लाल समुद्र तक पहुंचने तक खतरा इनके सिर पे बना हुआ था। The moment they reached, till they reached the Red Sea, the danger was still lurking upon them. और तब वो पीछे आया भी। And the danger still came back on them. यदि आप ध्यान से देखेंगे, and if you see it very keenly, तो इनका रियल छुटकारा लाल समुद्र के बाद हुआ। The actual deliverance came after the crossing of the Red Sea. और तब यहाँ से 3 दिन, And from here, 3 days. और जब 3 दिन के मार्ग पे ये लोग गए तो लिखा है कि कड़वा अनुभव हुआ। And after 3 days, that's where it is written that they had a bitter experience. जिस समय इनको बलिदान चढ़ाना चाहिए था, The time when they had to actually sacrifice, उस समय ये लोग कठिन परीक्षा में पड़े। that's the time when they actually fell onto trials and difficult trials. बलिदान का मतलब समझाना चाहता हूँ मैं। I would like to explain the definition of sacrifice. बलिदान क्या होना चाहिए था? What should have been the sacrifice there? ये कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, झल्लाना, इसको चढ़ाना था। The sacrifice that they should have done is all the grumblings, all the murmurs, all the nuisance talk. और यदि हम ध्यान से बाइबल को आगे पढ़ेंगे, And if we very minutely read the Bible ahead, आगे देखेंगे हम we will see ahead कि कैसे ये जो लोग लहू की छाप से निकले थे ये जंगल में ही मारे गए। and all those who are under the covering of the blood were those people who ultimately lost their lives in the wilderness. प्रतिज्ञा के देश तक पहुंच ही नहीं पाए। They never reached the promised land. यदि व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे, And if we read the book of Deuteronomy, तो ये जिस यात्रा को इन्होंने पूरा किया वो 11 दिन का मार्ग था। if you read the book of Deuteronomy, there we are told that this was a 11-day journey. पर ये पहुंचे कितने दिन में? And how many days did they take? 40 साल लगा। 40 years. 8 अध्याय।
And then now to the 8th chapter. पर इसके पहले कि हम 8 चैप्टर में जाए, वन हु इज आवर मॉडल, ये जो यीशु हमारा आदर्श है, जितने हमें आदर्श दिया, बपतिस्मा के बाद होता क्या है, ये मत्ती 3 उसके 16 और 17 पद को पढ़ेंगे. And before we will actually dwell upon Exodus chapter 8, we will look at Matthew chapter 3. And we will 16 and 17. and we will dwell upon verses 16 and 17. मत्ती का 3 उसका 16 और 17वां पद. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." यीशु पवित्र आत्मा से गर्भ में आया. Jesus came into the womb through the Holy Spirit. बहुत सारे इवेंट हुए. A lot of events happened. जब 12 साल का हुआ, When Jesus was 12 years old, तब मंदिर में बैठा था. he was sitting with in the temple, उसके पेरेंट्स झल्ला रहे थे उसके ऊपर, and his parents were literally upset with him. पर वहां पर भी परमेश्वर का ये आकाशवाणी नहीं हुआ. And there again, there was no broadcast, or there was no an oracle of God. पहली बार यहाँ पर परमेश्वर ने घोषणा किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं. This is the first time that God spoke from heaven, and he said that this is my son with whom I am well pleased. और उसने हमारे लिए नमूना दिया है. And he's given us an example. इससे पहले लोग बपतिस्मा क्या होता है उनको मालूम नहीं था. And before this, no one knew what baptism is पुराने all नियम about. के लोगों के लिए ये शब्द उनको मालूम नहीं था. And the people of the Old Testament were absolutely strange from this word. कल हमने देखा था कि बपतिस्मा शब्द पहली बार नया नियम में आया. The word baptism is for the first time reflected in the New Testament. पर बपतिस्मा का जो क्रिया है वो पौलुस के अनुसार लाल समुद्र में हुआ. But the work of the baptism was, according to Apostle Paul, already done in the Old और Testament. ये आकाशवाणी बताती है कि जिसका बपतिस्मा हुआ उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है. And this verse that we just read in Matthew chapter 3, verse 16 and 17 tells us that whoever gets baptized, Lord God is very pleased with them. और तब इस आकाशवाणी के बाद, And that's why after this broadcast, this oracle, जो परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई यीशु पर उतरा था, the Holy Spirit in the form of a dove which came upon Jesus, उसने अपना पहला काम किया. did his first work. 4:1. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. याद करिए Remember it? कि ये पैराबल देख रहे हो We are looking at a parable. कि रेड सी के बाद डेजर्ट, ये जंगल आता है. After the Red Sea comes the wilderness. और जंगल में परीक्षा होती है. And in the wilderness, each one is tested. यदि इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे 4 अध्याय मत्ती को, And if we study this chapter 4 of Matthew, तो आपको मिलेगा कि यीशु इस परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हुआ. and we will come across how Jesus came across this testing in the wilderness. जब भी उससे इब्लिस ने उसकी परीक्षा की, And whenever Satan tested him, उसने कभी ये नहीं बोला कि आई एम द सन ऑफ गॉड. he never mentioned himself or referred himself saying that I am the Son of God. उसने हर बार कहा लिखा है. Every time he kept mentioning, it is written. मैं एग्जांपल दिया करता हूँ. I keep giving examples. एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में A student in the examination hall, यदि याद ना आए कि लिखा क्या है, if he does not remember what is written, तो उसका फेल होना तय है. he's bound to fail. क्या लिखा है ये मालूम होना चाहिए.
what is written should be understood. पूरे भारत देश के मेरे मसीही भाई बहनों से मैं बार बार ये बोलते घूम रहा हूँ, And throughout the state of India, wherever I have gone across, I've kept telling them this. कोई भी चर्च, Whichever church, मैं बोलता हूँ, I'm telling you this, इंक्रीज योर बाइबल रीडिंग, increase your Bible reading. बाइबल का पठन बढ़ाओ, Read the Bible and increase that time. बाइबल का अध्ययन करो. Study the Bible. यदि अध्ययन नहीं करोगे And if you don't study it, तो प्रतिज्ञा के देश तक तो तुम जा ही नहीं सकते. remember you will never reach the promised land. लिखा क्या है? What is written? हम लोग यहीं फेल होते हैं. We fail in this area. मैंने अच्छे विश्वासियों को देखा है कि वो बोलते हैं कि हाँ कोई चीज लिखा है, कहाँ लिखा है याद नहीं आ रहा है. And I have come across many believers who say this, yes, I know about this, I know, but I do not recollect where it is written. यीशु ने हर बार कहा लिखा है. Every time Jesus kept mentioning, it is written. आपको मालूम है Do you know about this? कि प्रतिज्ञा के देश में जाने से पहले परीक्षा होती है. Before you could get into the promised land, there is a testing. और इसलिए And that's why आज का टॉपिक हमारा today's topic is परीक्षा. testing. किसका? Of whom? 8 अध्याय व्यवस्था विवरण. We will look at Deuteronomy chapter 8. क्यों इनको कड़वा अनुभव दिया परमेश्वर ने? Why did God give them a bitter experience? क्योंकि इन लोगों का जो स्वभाव था इजिप्ट का वो साथ में चले आ रहा था. Because the nature of Egypt was going along with them. शत्रु सारे लाल समुद्र में डुबा दिए गए. All the enemies were drowned in the Red Sea. पर वो जो स्वभाव है, But that nature, the old nature, संसार का स्वभाव, the worldly nature, वो इनके साथ था. was going along with them. यीशु से 3 बात पूछा गया. And it was asked to Jesus thrice. इजरायलियों के लिए भी 3 ही क्वेश्चन थे. And for the Israelites also, there were only 3 questions. 3 चीजों में उनको परमेश्वर ने परीक्षा किया. And in 3 things, God tested them. 8 अध्याय का 2 पद. We will look at Deuteronomy chapter 8, verse 2. And you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you should keep his commandments or not. 3 बातें. 3 things. सबसे पहला, First thing, नम्र बनाए. he would make you humble. जैसे ही कड़वाहट आती है, The moment bitterness sets in, मैं अक्सर जवान बच्चों को कहता हूँ, I keep telling the youth, जब हाथ में माइक आता है, when you keep the mic in your hand पब्लिक गैदरिंग है, and there is a public gathering, एक गाने वाला if the singer बहुत अच्छा गाता है, sings very well, सब लोग बोलते हैं वेरी गुड, गुड वॉइस, everybody, सभी लोग कहते हैं बहुत अच्छी आवाज है, टैलेंटेड. very talented, जैसे घर आता है, but the moment he comes home, वहां समझ में आता है कि तुमने अपने स्वभाव को बलिदान किया कि नहीं. and that's where the true testing is, when you find out whether you have sacrificed that nature or not. कड़वाहट का अनुभव, The experience of bitterness. हर चीजें हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं होती है. Everything does not happen the way we want it, we desire. जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई बात नहीं होती है, And the moment it does not happen the way we desire, उस समय चेक होता है कि तुमने बलिदान किया कि नहीं. and that's the moment when it is tested whether you have sacrificed or not. तो मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ, I would like to say this to everyone, जिन्होंने लाल समुद्र पार किया, all those who have crossed the Red Sea, जिनके ऊपर लहू की छाप लगी है, and all those who have been covered by the blood of Jesus. तुम सावधानी से इस दृष्टांत पर ध्यान करो. You keep a very, very attentive mind on this parable. छुटकारे का गीत, The song of redemption, नाच, the dancing, प्रेजिंग, the worship. ये सब के बाद क्या है? What after this? नॉर्मल रूटीन में जब आप अपने आते हो, When you come into your normal routine, चर्च में हम बड़े आध्यात्मिक हो जाते हैं. we become very spiritual while we are in the church. पब्लिक प्लेस में हम बड़े आध्यात्मिक दिखाई देते हैं. And we keep
portraying ourselves as very spiritual when we are in public spaces even. जब हम घर में हैं, But when we are at home, जब हम पति पत्नी हैं, but we are husband and wives, प्रभु मुझसे रोज कहता है, the Lord tells me this every day. पिछले समयों में And the days gone by, मैं भी फेल था, even I was a failure. प्रभु ने मुझे सिखाया, The Lord taught me, बेटा son, प्रभु में आनंदित रहो, be joyful in the Lord, सदा आनंदित रहो, always be joyful, तुम्हारी कोमलता, your smoothness. और तब मुझे मालूम है And I know that. कि मैं बाहर बहुत कोमल, And outside, I'm a very soft person. बहुत ही सच्चाई ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ. And I'm telling you this in truthfulness. हर व्यक्ति बाहर बहुत ही सॉफ्ट होता है. And outside, every person is very soft. उन्हीं में से मैं भी हूँ. Even I am one of them. जब हम बाहर होते हैं, When we are outside, बड़ा सॉफ्ट आउटपुट होता है. we are very soft. बहुत कोमल और नम्र नजर आते We हैं. are very smooth and silky. जब घर में होते हैं, But when we are at home, जब बच्चों के साथ होते हैं, when we are with our children, जब पति पत्नी एक साथ होते हैं, when we are with our husbands and wives, मैं फेल था. I was a failure. ये कहानी नहीं है. This is not a story. ये मेरे लिए पैराबल. For me, this is a parable. जिस दिन से मैंने ये बात समझा, सीखा, The day I realized and I learned about this, मैंने इस बात को संभालने का प्रयास किया है. I have always tried and worked hard upon this. वो बीटर एक्सपीरियंस, कड़वे अनुभव इसलिए देता है कि वो तुझे नम्र बनाए. He gives us these bitter experiences so that he could humble us. सब चीज सही होता है तो हम बड़े नम्र होते हैं. If everything is going on fine, we look as very, very humble. थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाए, A little topsy-turvy, फिर देखो. and see, सबसे पहली बात जो उनको परखा गया कि नम्र है कि नहीं, the first thing that they were tested for whether they are humble, तब वो कह रहे थे, and that's the moment that they हम said, मिस्र में ही ठीक थे. we were good enough in Egypt. ध्यान से पढ़िए. Be careful when you read it. देन दूसरी बात, Then second thing, तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है. and testing you would try to find out what's in your heart. मैं इन दिनों में एक बात बताते घूम रहा हूँ. And in these days, I am going around telling one thing. Good works with wrong motive. Good works, अच्छे कर्मों के साथ जो मतलब अपने उद्देश्य गलत हैं. बहुत सारे काम हमारे बहुत अच्छे हैं, Many of our works are very good, पर हमारे जो उसके पीछे मनसा है, but the intention, the desire that we have behind it, वो गलत होता है. which is wrong. मेरे जीवन में भी ये मैंने चेक किया, In my life as well, I have tested और this. जो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया, And the things that I have experienced personally, बहुत अच्छा काम, very good work, बाइबल टीचर, Bible teacher, पर कई बार मेरे अंदर की मनसाएं गलत होती. but the intentions were wrong. वो बोलता है कि तू नहीं जाएगा, But he kept telling me, you will not go. आगे देखेंगे We will see ahead. कि कौन कौन नहीं गए. We will see ahead who all never reached there. तेरे मन में क्या है, तेरे मोटिव्स क्या हैं, What is in your mind? What are your intentions? ये हमारा आउटपुट बताता है. Our output will show us that. और इसलिए And that's why ये पैराबल हमको जानना बहुत आवश्यक है. we need to understand this parable. तीसरी बात, Third thing, कि तू आज्ञा मानेगा कि नहीं, whether you will listen to the commandments or not, तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं. whether you will obey those commandments or not. आगे क्या था मालूम? Do you know what was lying ahead? बैटल. Battle. और इसलिए जब गिनती किया, And when they started counting, तो उन्हीं की गिनती की जो जवान थे और जो योद्धा थे, युद्ध करने के लायक. and only those people who were young and were able to go into battle, were young and fit, were counted. आर्मी, Army, Sena. कमांड जो है वो आर्मी वालों को समझ में आता है. And the commandments are known only by the ones who are in the army. तिमुथियुस को Timothy, being a man of God, परमेश्वर का जन होकर पौलुस ने लिखा. and Apostle Paul wrote to Timothy, परमेश्वर के एक अच्छे योद्धा की नाई.
and like a good warrior for Christ. अपने आप को संसार के काम में मत लगाना. Don't put your works for the world. योद्धा, For a soldier. हर विश्वासी एक योद्धा होता है. Every believer is a soldier. और एक योद्धा को यदि आप अध्ययन करोगे, And if you study a soldier, तो वो कमांड को फॉलो करने का प्रैक्टिस कराया जाता है उनको. and they are trained to follow commands, to obey commands. मसीही जीवन युद्ध करने का जीवन. The life of a Christ follower आगे is a life for battle. आगे हम देखेंगे कि बैटल क्या है. And we will see ahead what is the battle. ये हम कल देखेंगे. We will see this tomorrow. पर आज जंगल में आगे क्या क्या हुआ, And we will see today what all happened in the wilderness. क्यों इसको देखना जरूरी है. Why is it necessary to see all this? यहूदा की पत्री, We will look at the book or the letter of Jude. बिफोर रेवलेशन. This is just before Revelation. यीशु मसीह के दुनिया में आगमन की बात होने के ठीक पहले एक छोटी सी पत्री है जिसमें एक ही चैप्टर है. And there is a small letter just before the book of Revelation, just a very small thing, which is only one chapter. एक चैप्टर है. ये 21 दिन मिले हैं हमको. And we have 21 days before us. मुझे नहीं मालूम कि हम कितने दिन कंटिन्यू करेंगे, I do not know how many days we will be able to continue. पर एज पर आवर पीएम As per the way our leader, our prime minister has declared, 21 दिन. 21 days. नो प्रॉब्लम. No problem. एवरी डे. Rose. मैं अभी शाम तक मेरे पास कई फोन कॉल आए. By evening, I started getting many phone calls. आज भी होगा क्या अंकल? Whether we will have it today as well or what. हम लोग लिखित में वो डाल रहे हैं वो अपने स्क्रीन पे. And we are mentioning that on the screen in कई writing, लोग ध्यान नहीं देते हैं. but still they are not looking at what is written. जब तक लॉकडाउन है तब तक ये क्लासेस चलेंगी. As long as we have the lockdown, we will continue with these जब हम अपने classes. काम में व्यस्त हो जाएंगे, And when we go back into our working worlds, फिर से हमारे पास समय नहीं रहेगा. again we won't have time for all ये this. समय परमेश्वर का दिया हुआ है अपने लोगों के लिए. We know that this time has been given by God to us for His people. इसलिए That's the reason ये why. यहूदा का 5वां पद क्या बोलता है. And we will see the letter of Jude in the 5th verse. Now, I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus, who saved people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. छुड़ाने के बाद, After rescuing them, छुटकारा पाने के बाद भी अनबिलीफ की बात करता है. after being delivered, he's still talking about unbelief. और ये हमारे लिए सूचना है. And for this is a notice for us. जो सब बात एक बार जान चुके हैं, And all those who already knew all these things, जो बाइबल पढ़ते हैं, the people who read the Bible, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि पीछे क्या क्या हुआ. and they know it very well what all happened. A long इसके time बाद ago. भी यीशु मसीह के आने के ठीक पहले एक पत्री लिखी गई. And that's the reason why before Jesus could come, there is this small letter that is written. इस पत्री का भी अध्ययन करेंगे हम. And we will go through this letter as well. उसी में से एक बात हमारे विषय से जुड़ा हुआ है. And that is one thing that is connected with the study that we ये have. कह रहा है, It is saying, यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी, and even if you have known all this still, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ I would still like to remind you कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया. I would like to tell you, remind you of all this stuff. The entire clan that came out of Egypt, which was delivered out of Egypt, having bought and having been in unbelief, he destroyed them. कुछ कुछ शब्द हैं There are certain words जिसके विषय में हमको मालूम नहीं है. we do not know about. किब्रोत तावा, Kibroth Thawa. एक स्थान आया किब्रोत तावा. There was a place called Kibroth Thawa. ये क्या जगह है? What is this place? 11 अध्याय गिनती. We will open to the book of Numbers, chapter 11. हुआ क्या था? What happened there? 4 to 6. Now, the rabble that was among them had a strong craving. रेबल, Rabble. मैंने पहले दिन का अध्ययन यदि आप देखेंगे तो इसका जिक्र किया था.
And what we saw in the first day of our study, I had made a mention of हिंदी this. में लिखा हुआ मिली जुली भीड़. In Hindi, the translation is a mixed kind of crowd. जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, And the mixed kind of crowd that was there with them, क्या होने लगा? आगे पढ़िए जरा. what happened ahead, we'll read. Now, the rabble that was among them had a strong craving. Strong Craving. and And the people of Israel also wept again and said, क्या बोल रहे थे? Oh, that we had meat to eat. ये मांस के लिए रो रहे थे. They were crying for meat. ये मछली के लिए रो रहे थे. They were crying for fish. आगे पढ़िए. We remember the fish we ate in Egypt Yes. that cost nothing. आगे. The cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. ये सब All these things. भारत देश इसके लिए फेमस है. Our great nation is famous for all this. अक्सर लोग बोलते हैं. Every time you find people saying this. मेरे घर में बोलते हैं. And in my house, they say this. स्वाद. Sorry? स्वाद. Oh, taste. जीभ का स्वाद. The taste of the tongue. किसमें स्वाद आता है? In what do you get the taste? प्याज, लहसुन. In onions and garlic. मैं जब इसको अध्ययन कर रहा था, पहले पढ़ा उसके बाद अध्ययन करना जब शुरू किया, First, when I read it, and after that, when I started मैं studying it, अपना सिर पकड़ के बैठ गया. I just caught my head and I sat down. परमेश्वर कितना छोटा छोटा चीज का हिसाब रखता है. And God keeps an account of how many small things. सब मैं कहना और बताना और अपने जीवन में इसको लागू करना आरंभ किया. And then I started implementing all these things in my life. किस विषय में? In which subject? स्वाद के विषय में बोलना मत. Taste. Don't talk about it. नमक है कि नहीं? Whether there is salt or not, मसाला है कि नहीं? whether there is masala or there is spices or not. लिखा है, It is written. ये मसाले के लिए, मछली के लिए, मटन के लिए रो रहे थे. And these people were crying for meat, fish, the masalas, spices. एक चीज दिया गया था इनको, मन्ना. The one thing that they were given was manna. दिस इज द टाइम. This is the time. ये समय आया है. This is the time. एक आध हफ्ते के भीतर ये सब जाने वाला है तुम्हारा टेस्ट. And all this thing is going to go. मजबूरी में तुमको जो सामने है वो खाना पड़ेगा. And whatever you lay your hands upon, you will have to eat. उस समय ये टेस्ट होगा. And this is the time that it will be tested. बिफोर टाइम परमेश्वर का वचन बता रहे हैं And before time, the word of God is instructing you. कि ऐसे समय आने पर तुम क्या करोगे. And when this time comes, what are you going to do? क्या हुआ आगे? What happened ahead? 11 का 33 और 34 पढ़िए. We will read from Numbers chapter 33 and 34. While the meat was yet between their teeth, before it was consumed, the anger of the Lord was kindled against the people. And the Lord struck down the people with a great plague. Therefore, the name of that place was called Kibroth Hattava, because there they buried the people who had the craving. कौन लोग थे ये? Who were the people? टेस्ट के पीछे मारे गए. The ones who were killed with the testing. ये जुबान के विषय में नहीं लिखा है. It's not given about the tongue. ये टेस्ट के विषय में लिखा है. It is given about the taste. स्वाद. Taste. मछली, Fish, मटन. meat. लिखा है मांस और मछली. Spoken about. यहाँ तक कि लहसुन प्याज तक का रिकॉर्ड है. Even the onions and the garlic is spoken about. कई बार बोलते हैं हम कि मिर्ची थोड़ा और होना चाहिए था. And sometimes we say that it should have been a little more मैं जैसे ही spicy. सुनता हूँ कि ये मिर्ची नमक का कोई बात किया तो बोलता हूँ मैं तुम आगे नहीं जाने वाले. And when the moment I hear somebody grumbling about less of spice and salt and all that stuff, I keep कई बार telling कई them. लोग मुझसे पूछते हैं. Many people tell me. मेरे घर में पूछते हैं. In my house they say this. कैसा आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. What happened? They didn't like it. मैं खाने के विषय में बोलना बंद कर दिया. I have stopped grumbling about food. लिखा है It is written कि इन्होंने खाने के विषय में मुंह से कुछ बोला था.
And they had said, grumbled about whatever और food they got, परमेश्वर ने इनको दिया and the Lord gave और अभी them food, मुंह में ही था। and they still had it in their कि mouth. परमेश्वर ने बड़ी मार से मारा। And God struck them with a big blow. किब्रोत तावा It's called Kibroth Hatava. अपने अपने हेड में, In their head, अपने अपने नोटबुक में, in your notebooks, अपने अपनी बाइबल में, in your Bibles. जहां आपका नाम है उसके नीचे ये शब्द लिख लिए रहो, Please write this name under your names there. स्वाद के कारण कुड़कुड़ाए, And if you grumble because of taste, कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाए, if you grumble because of bitterness, मारे जाओगे। you're going to be slaughtered. आगे यात्रा पूरा होने वाला नहीं। Your journey is not going to be completed. क्या लिखा है? What is written? गिनती 14 अध्याय In Numbers chapter 14, 22 और 23। 22 and 23. Numbers 14, 22 and 23. None of the men who have seen my glory and my signs that I did in Egypt and in the wilderness, and yet have put me to the test these 10 times and have not obeyed my voice, shall see the land that I swore to give to their fathers, and none of them who despised me shall see it. क्या लिखा है? What's written? ये विचित्र रिकॉर्ड है। It's a very strange kind of record. हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है। We never realize this. एक गाना जरूर गाते हैं हम लोग। We definitely sing a song on this. खुल जाएंगी किताबें। The books will be opened. हमको मालूम नहीं है कि कौन कौन सा किताब। We don't even know what kind of books. ये एक किताब ये भी है जिसमें ये रिकॉर्ड किया गया कि लोग कितने बार टेस्ट के लिए कुड़कुड़ाए। And there is a book which mentions how many times these people have grumbled because of the taste. मैं बोल सकता हूँ रिकॉर्ड ऑफ ग्रम्बलिंग। There is a record of grumbling as well. और कितने बार ये भी लिखा है। And how many times even that is mentioned. 10वें के बाद 11वें का टाइम नहीं दिया इसको परमेश्वर ने। And that's the reason why after the 10th time, 11th time, there was no permission for that. उसने बोला कि आगे जाएंगे पर इनकी लाशें यहीं सड़ेंगी। We will move ahead, but their bodies are going to rot here itself. 11 दिन के बदले 40 साल क्यों? Because instead of 11 days, why 40 years? 33 and 34। We will look at verses 33 and 34. Numbers chapter 14, 33 and 34. And your children shall be shepherds in the wilderness 40 years, and shall suffer for your faithfulness until the last of your dead bodies lies in the wilderness. ये क्या लिखा है? फेथफुलनेस। What's written here? Faithfulness. विश्वास योग्यता. हिंदी में और इस वर्जन में फर्क है। There's a difference between the English and the Hindi version. लिखा है तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते रहेंगे। बाल बच्चे तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगतेंगे। Yes. फेथफुलनेस का नहीं है। It is not the faithfulness that is mentioned here. There is a error in that English version. आगे क्या लिखा है? What it says further? हिंदी पढ़ दो। Okay. जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। लास्ट टाइम इंग्लिश में पढ़ लो। दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात According to the number of days in which you spied out the land, 40 days, a year for each day, you shall bear your iniquity 40 years, and you shall know my displeasure. तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। And now you will know what is my displeasure. ये लोग अज्ञानता पूर्वक परमेश्वर का विरोध कर रहे थे। And in lack of knowledge, they were going against the Lord. परमेश्वर इनके साथ साथ चल रहा है। The Lord is walking along with them. ये परमेश्वर के सुनते इन लोग मूसा के सामने आकर
कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, बकना, बकझक ये सब करते थे। And they were grumbling, they were talking nuisance, they were murmuring, उनको मालूम नहीं था कि उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। and they never knew that there is a record being kept of all this that was happening. हम में से कितने लोगों को मालूम है? How many of us know all this that is going to be भूल kept? जाएंगे, किताबें गाते तो हैं हम, We keep singing that the books are going to be opened. कभी ध्यान किया Have you ever realized कि it? कौन सी किताब है? What books are these? हाउ मच टाइम? How much? How? कितनी बार? अभी हमने पढ़ा 10 बार के बाद 11वें का टाइम इनको नहीं दिया गया। After the 10th time, the 11th time it was not given to them. अनुग्रह के लोग हैं हम लोग, We are all people of grace, इसलिए हमको पता नहीं चलता है कि कितने बार हो चुका है, and that's the reason why we have lost count. पर इसका हिसाब पूरा रखता है वो। But God keeps all account of जब वो everything. आएगा When He comes, उस दिन ये गिनती सामने करेगा। and that is the day He's going to keep this जब account. इनके लिए गिनती किया कि 10 बार इन्होंने ऐसा किया, And if God has kept an account of these people, और since that यदि 10 times He have और done यदि that, हमारे विषय में वो गिनती नहीं बताएगा तो अन्यायी होगा। and if in our times, if they are not going to, He's not going to talk about this account, then it will be injustice. इसलिए That's the reason why. कितने लोग थे? How many people were there? मोर देन 20 लाख। More than 20 lakhs. एक बहुत बड़ी भीड़। There's a huge crowd. यदि 8 अध्याय पढ़ेंगे, If we read the 8th chapter, उसने लिखा है, it is written, मैंने तुझे खाना खिलाया, I gave you food, तुझे सब कुछ दिया, I gave you everything. 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए, In 40 years, your clothes didn't become old. तेरे तन से गिरे नहीं, They never fell off your मतलब body. इतना चलने के बाद भी तेरा हेल्थ डाउन नहीं हुआ, Even after walking for so many days, your health और never ना reduced. तेरे पाँव फूले। Never did your feet swell up. ये सब लिखा है, पढ़ लेना। Everything is mentioned there. Read about it. उसके बाद भी Even after that, कौन लोग थे ये? who are these people? इब्रानी 4 अध्याय, We will look at Hebrews chapter 4. उसका दूसरा पद। We will look at Hebrews chapter 4, verse 2. Chapter 4, verse 2. For good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them, because they were not united by faith with those who listened. लिखा है, It is written, हमें उन्हीं की ना ही सुसमाचार सुनाया गया है। like them we were also told about the good news. शायद आज से पहले आपको ये पैराबल नहीं मालूम, Maybe before this you never knew about the redemption, the parable of redemption. और तब हमको फिर से बताया जा रहा है। That is the reason why we have been told पर यदि again आप about this. केवल सुनोगे But if you're going to only listen, तो सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, and we realize this only by hearing it, they did better क्योंकि लिखा है कि सुनने वालों के मन में नहीं बैठा, It is written that all those who heard, it did not settle in their hearts. विश्वास के साथ नहीं बैठा। It did not settle in their hearts with faith. कितने लोग हैं How many are there जो इस पैराबल को विश्वास के साथ अपने अपने जीवन के लिए ग्रहण कर रहे हैं? who are now, as they are hearing it, are receiving it with faith and are getting it deep into their hearts? कुछ लोग बोलते हैं Some of them are saying, परमेश्वर प्रेमी है, the Lord says, Lord is love. वो नाश नहीं करेगा। He's not going to destroy us. पढ़ लेना ये, Just read this. परमेश्वर ने इनके साथ क्या किया, What did God do with these people? बोल के किया। And He told them and did it. तुम्हारी लाशें इसी जंगल में गलेंगी, सड़ेंगी, पर तुम वहां नहीं जाओगे जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की थी। And He said that your bodies are going to rot in this wilderness, but you are not going to enter the promised land that I have promised to your fathers. इसलिए That's why. हम भी वैसे ही लोग हैं। We are the same kind of people. वो पुराने नियम के बुलाए हुए लोग थे, Those are the Old Testament called out people, हम लोग नए नियम के बुलाए हुए लोग। and we are the New Testament called out people. प्रभु ने सहायता किया है, The Lord has aided us. अवसर दिया है He's given us the opportunity, कि हम इन बातों पर इन दिनों में, and He's given us the opportunity that in today's day, जबकि सारे काम बंद हैं, when everything is locked down लगभग सारा दुनिया शांत हो गया, and everything is quiet and सारी दौड़ standstill, भाग रुक गई है, every running about has come to a इससे standstill. पहले कि वो अंतिम दिन आए क्रोध का, And before that day of wrath comes in,
परमेश्वर अपने लोगों को चिताना चाहता है, He wants to warn each of His people. इसलिए ये समय हमको दिया गया। That's the reason why we've given this time. धन्यवाद करना है We need to give thanks. और इन बातों पर मन लगाना है। We need to set our hearts on these words. लिखा है, सुनने वालों के मन में विश्वास से नहीं बैठा, The reason why these people did not, they just heard and it did not settle in their hearts with faith. इसलिए सुने हुए वचन से उनको कोई लाभ नहीं मिला। That's why what they heard, they did not benefit out of it. आप सुन रहे हैं, You're hearing this, नए हैं, you're new, पुराने हैं, you're old, उससे कोई मतलब नहीं। there's no meaning of that. टेस्ट में पास होना है, And you have to pass the test. परीक्षा में पास होने का। You have to pass the test. और परीक्षा किसकी होती है, And what is going to be tested? ये हमने देखा, We just saw that. और ये लोग फेल हो गए। And these people failed. ये कह रहा है कि हम भी उसी जगह पर हैं, हमें भी उसकी बातें मिली हैं। And we are also in the same place. We also have received the same things. प्रभु आप सबकी सहायता करें, God keep aiding you, all of you. आपको अपने आत्मा से मार्गदर्शन करे May He guide you with His Spirit, कि उसके वचन को हम गंभीरता पूर्वक लें। that each one of us would take His word seriously. ये जो समस्या आई है आज संसार में, The trial that has come upon us in this entire world now, उसमें अपना ध्यान न लगाएं। we will not put our attention on that. केयरफुल जरूर रहना है, We will definitely be पर careful, मन कहाँ लगाएं? but where are going to be set our hearts upon? परमेश्वर के वचन। On His word. ये समय दिया गया है, This time has been given to us. परमेश्वर ने ऐसा होने दिया है The Lord has allowed this to कि happen. सारे काम बंद हैं, Every work has come to a सारे standstill. स्कूल बंद हैं, Every school is closed. आप कहीं पब्लिक में जा नहीं सकते, You cannot go out in public. कोई आपके पास आ नहीं सकता। No one can come into your home. परमेश्वर कहता है The Lord says this. हमारे जीवन Alone में time. एकांत नहीं है, We don't have alone time. परमेश्वर ने हमको एकांत की परिस्थिति में डाला है He has put us alone with Him now, कि हम गंभीरता पूर्वक उसके वचनों पर ध्यान करें। that we would seriously look at His word. प्रभु आप सभी को आशीष दे, Lord, bless each one of you. सहायता करें। May aid you. थैंक यू वेरी मच। God bless you.